Om Shanti. अव्यक्त वाणी का बचे हुए पॉइंट्स हैं 18 जनवरी 2007। The remaining points of the Avyakt Vani of 18th January 2007. पहले पेज से लेकर 5 पेज के मध्य तक यह अव्यक्त वाणी पढ़ी गई थी। This Avyakt Vani was read from the first page till the middle of the 5th page. 5 पेज के मध्य में बोला है, On the 5th page, in the middle, it is said, चारों ओर के स्नेही बच्चों को लवली और लवलीन, to the children merged in love and to the lovely children from all around, दोनों प्रकार के बच्चों को, to both kinds of the children, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल, पावरफुल, श्रेष्ठ बच्चों को, to the children always accumulating millions on each step according to the shrimat of the Father, full of knowledge, powerful, elevated, सदा स्नेही भी हो और स्वमंधारी भी, always lovely as well as having self-respect, sammandhari भी, and also giving respect to the others. ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, To such victorious children who always sustain the shrimat of the Father, सदा बाप के हर कदम पर पदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को, to the children being easy yogis who always accumulate millions on every step of the Father, बाप दादा का। BapDada's. लेकिन आज वतन में जो आपकी एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी, But also the children of the advanced party who are in the subtle world today, एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को याद प्यार हमारी भी देना। everyone has said this. Give also on our behalf remembrance and love to all, to the children from all around, और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। and also give our message. We are waiting for you. कौन बोला? Who spoke? अव्यक्त बाप दादा। The Avyakt BapDada spoke. और किसकी तरफ से बोले? And on whose behalf did he speak? एडवांस पार्टी के बच्चों की तरफ से बोले। He spoke on behalf of the children of the advanced party. मना एडवांस पार्टी के बच्चों से सदाकाल घुल मिलकर बाप दादा रहते हैं। It means that BapDada always remains in very intimate terms with the children of the advanced party. और सीजन जब आता है, And when the season comes, तो थोड़े समय के लिए बेसिक पार्टी वालों के साथ भी मुलाकात करने जाते हैं। he goes for some time to meet those in the basic party. इसलिए बोला For this reason, it was said कि एडवांस पार्टी वाले बच्चों ने भी विशेष याद प्यार दिया। that the children of the advanced party also gave the special remembrance and love. किसको? To whom? बाप दादा ने तो बच्चों की तरफ से दिया, एडवांस पार्टी वाले बच्चों की तरफ से। BapDada gave on behalf of the children of the advanced party, लेकिन दिया किसको? बेसिक पार्टी वालों को। but he gave to whom? To those in the basic party. और बोला And he said कि वो एडवांस पार्टी के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। किसका? those children of the advanced party are waiting for you. For whom? Students, for those of the basic party. बेसिक वालों में
जो दूसरे दूसरे धर्म के आधारभूत हैं, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। Are they waiting also for those in the basic party, who are the root souls of the other religions? या सिर्फ चंद्रवंशियों का इंतजार कर रहे हैं? Or are they waiting only for those of the Moon dynasty? एडवांस पार्टी वाले किसका आह्वान कर रहे हैं? Who are those in the advanced party invoking? किसका इंतजार कर रहे हैं? Who are they waiting for? सूर्यवंशी तो खुद ही है। Students are saying something. They themselves are the Sun dynasty. एडवांस पार्टी वालों से भी ज्यादा एडवांस कौन होगा? Who will be more advanced than those in the advanced party? एडवांस पार्टी में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनसे ज्यादा एडवांस कौन होगा? Who will be more advanced than the Sun dynasty children in the advanced party? चंद्रवंशी ज्यादा एडवांस होंगे क्या? Will the Moon dynasty be more advanced? इस्लाम वंशी ज्यादा एडवांस होंगे? नहीं। Will those of the Islamic dynasty be more advanced? No. दूसरे दूसरे जो भी वंशी हैं आधार मूर्तों में, Those who belong to the other dynasties, among the root souls, झाड़ में नीचे जो जड़ें दिखाई गई हैं, उनको कहते हैं आधार। the roots which are shown below in the tree are called supports. सारे सृष्टि वृक्ष का आधार है जड़ें। The roots are the support of the entire world tree. और जड़ों पर बैठे हुए जो भी बच्चे हैं, उनमें किनका इंतजार कर रहे हैं? And from among all the children seated in the roots, whom are they? It means the advanced party. Waiting for? चंद्रवंशी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? They are waiting for the Moon dynasty children. Why? क्योंकि अव्यक्त वाणी में पहले ही इशारा दिया है कि विजय माला का आवाहन करना है। Because the hint was given in the Avyakt Vani already before that they have to invoke the Vijay Mala. विजय माला कौन से वंश की है? चंद्रवंशियों की है। Which dynasty does the Vijay Mala belong to? To the Moon dynasty. विजय माला का हेड भी कौन से वंश का है? To which dynasty does also the head of the Vijay Mala belong? Students, the Moon dynasty. राधा कौन से वंश की होगी? चंद्रवंश की। Which dynasty will Radha belong to? Students, to the Moon dynasty. To the Moon dynasty. मुखिया तो वही है ना? She is the main, isn't she? और तो होती हैं सब पटरानियां। And all are patranis, the royal wives. रानियां, Queens, गोपियां, gopis. लेकिन महारानी सिर्फ एक ही होती है। But the Maharani, empress, is only one. राधा। Radha. राधा की जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। The purity of Radha can't be compared with anyone else. तो बोला है विजय माला का आह्वान करना है, माना विजय माला की जो मुखिया है। So it was said, you have to invoke the Vijay Mala, meaning the one who is the head of the Vijay Mala. जिसके लिए मुरली में भी बोला है। For whom it was also said in the Murlis. क्या बोला है? What was said? शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। If one queen of the honeybees goes out, the entire hive goes behind it. तो विजय माला का आवाहन करना माना विजय माला की मुखिया रानी मक्खी का आवाहन किया तो जैसे सबका आवाहन किया। Therefore, to invoke the Vijay Mala means that if they invoked the head of the Vijay Mala, the queen bee, it is as if they invoked all. तो उनका एडवांस पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं। So those in the advanced party are waiting for her. तो आप जल्दी से इंतजाम करो। Make arrangement quickly.
किससे कहा? बेसिक वालों। To whom was it said? A student. To those in the basic. बेसिक वालों से कहा, It was said to those in the basic. आप जल्दी से इंतजाम करो, Make arrangements quickly. जल्दी जल्दी इंतजाम करो। Make arrangements very quickly. विशेष Especially, आप सबकी प्यारी माँ, dear mother of you all, दीदी, Didi, भाऊ विश्व किशोर Bhau Vishwa Kishore, और जो भी साथी गए हैं and all the companions who went एडवांस पार्टी में, in the advance party. वो लोग कैसे गए हैं? How did those people go? फूल में शरीर छोड़। A student leaving the body, शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, वो तो सूक्ष्म वतन में विराजमान है। having left the body, they are sitting in the subtle world, in the subtle body. लेकिन ऐसे नहीं सदा सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। But it is not like this that they remain always in the subtle world. सूक्ष्म शरीरधारी वो आत्माएं जिनको बोला है Those souls are in the subtle bodies, for whom it was said, इंस्पिरेटिंग पार्टी। inspirating party, it means inspiring party. वो एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वाली साकार आत्माओं में प्रवेश करते हैं। They enter the corporeal souls of the advanced party's planning group, और प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते हैं। they enter and play their part. तो जो भी साथी गए हैं उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है। So all the companions who have gone have given remembrance and love to all of you. मैंने एडवांस पार्टी की दो प्रकार की आत्माओं ने याद प्यार दिया। It means that two types of the souls from the advanced party gave remembrance and love. एक तो जो बेसिक से शरीर छोड़ करके चले गए, One, those who went away from the basic, having left the bodies. सूक्ष्म शरीरधारी हो गए। They became those in the subtle bodies. दूसरे वो The second, those जिनमें वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करती है, in whom those souls in the subtle bodies enter. वो हैं आकारी, They, the first ones, are subtle, ठेठ आकारी। genuinely subtle. उनका साकार शरीर नहीं है। They don't have a corporeal body. साकार शरीर का उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। Their account with the corporeal body was completed. और दूसरे हैं And the second type are those souls जिनका साकार शरीर होते हुए भी who, despite having the corporeal body, आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज को प्राप्त किया हुआ है। have attained the stage of the subtle churning. ऐसे आकारी सो साकारी प्लानिंग पार्टी के बच्चों में वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं प्रवेश करती है। Those souls of the inspirating party enter such subtle corporeal children of the planning party, और आप सबका माने बेसिक पार्टी वालों का आवाहन कर रही है। and they are invoking all of you, means those in the basic party. कहाँ आवाहन कर रही है? Where are they invoking? कहाँ आए? Where should you come? आवाहन कर रही माने आ जाओ, तो कहाँ आ जाओ? To invoke means come. So come where? आवाहन कर रही है कि बाप दादा जहाँ प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहे हैं वहाँ पहुँचो। They are invoking arrive there where BapDada is playing the practical role. तो आप सबको याद प्यार दिया है और साथ साथ मीठी माँ आपकी उसने यही कहा है। So they gave remembrance and love to all of you. Together with this, your sweet mother said just this. कि अभी विजयी बन दुख दर्द दूर कर जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ।
now having become victorious, having removed sorrows and pains, become the companions of the Father very quickly in order to open the gate of the abode of liberation. ये मुक्ति धाम का गेट कहाँ खुलेगा? Where will this gate of the abode of liberation open? ऊपर के धाम में खुलेगा या नीचे के धाम में खुलेगा? हैं? Will it open in the abode above, or will it open in the abode below? तुम बच्चे परमधाम को षष्ठी पर उतार लेंगे, क्या मतलब हुआ? You children will bring the supreme abode down to this world. What's the meaning? कि नीचे षष्ठी पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है जो बीज रूप स्टेज वाले होंगे. That down here, just in this world, some gathering of Brahmins has to be prepared who will be in the seed stage. निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज वाले होंगे. They will be in the incorporeal stage without vices and ego. निसंकल्प स्टेज वाले होंगे. They will be in the thoughtless stage. ऐसे बच्चों के संगठन में ऐसा संगठन तैयार करने के लिए बाप के साथी बन जाओ. Become the companions of the Father in the gathering of such children, in order to make ready such gathering. कौन बन जाए साथी? Who should become the companions? बेसिक वालों से बोला. It was said to those in the basic. ब्रह्मा बाप ने, Brahma, the Father, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं. is giving special love and remembrance from the heart also to you all, who have not seen the Father in the corporeal. किनको याद प्यार दे रहे हैं? जो साकार में नहीं, जो बेसिक में है लेकिन ब्रह्मा बाप को साकार में नहीं देखा है. To whom is he giving remembrance and love? To those who are in the basic but didn't see Brahma, the Father, in the corporeal. कौन से साकार की बात है? Which corporeal does it concern? साकार ने तो 69 में ही शरीर छोड़ दिया था. The corporeal one left the body already in 69. उस साकार की बात है क्या? Is it the question of that corporeal? वो तो साकार शरीर छोड़ गया. That one left the corporeal body. शरीर ही नहीं रहा तो देखने की बात ही नहीं. The body didn't remain. Therefore, there is no question of seeing him. अब वही साकार ब्रह्मा जो शरीर छोड़ करके अव्यक्त आकारी बन चुका है, Now that corporeal Brahma, who having left the body has become avyakt and subtle, वो प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है. is playing the role entering the body. और बाप भी, बाप माना And the Father as well. The Father means शिव बाप, the Father Shiva. वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे. He also is playing the role entering. जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे हैं, The one whom he enters and is playing the role वो है मुक्ति धाम का गेट खोलने वाला निमित्त तंधारी. is the bodily being instrumental in opening the gate of the abode of liberation. एक है मुक्ति धाम, One is the abode of liberation. एक है सुख धाम, One is the abode of happiness. और एक है दुख धाम. And one is the abode of sorrow. तीन धामों के तीन निमित्त हैं. There are three instruments of the three abodes. तीन तबक्के हैं. There are three levels. ब्रह्मांड में कितने तबक्के हैं? How many levels are there in the universe? Students, 3. मुक्ति धाम, The abode of liberation. सुख धाम और दुख धाम. The abode of happiness and the abode of sorrow.
मुक्ति धाम का शांति देवा कौन? Who is the deity of peace of the abode of liberation? शंकर को कहते हैं मुक्ति धाम का देवा. Shankar is called the deity of the abode of liberation. देव देव महादेव. Dev Dev Mahadev. सबसे ऊंचा धाम भी कौन सा है? Which abode is the highest? मुक्ति धाम. The abode of liberation. मुक्ति धाम का मुखिया है शिव. The chief of the abode of liberation is Shiva. लेकिन साकार में नहीं है. But he isn't in the corporeal. उसकी बिंदी का नाम शिव है. The name of his point is Shiva. फिर जब साकार में प्रवेश करता है और उस साकार को आप समान बना लेता है. Then, when he enters the corporeal and makes that corporeal equal to himself, बाप समान बनने वालों में कोई का पहला नंबर तो होगा. someone will be the first among those who become equal to the Father. तो जिसका पहला नंबर होता है उसका नाम शिव के साथ जुड़ जाता है. The name of the one whose number comes first is joined with Shiva. 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है. There is only one deity among 330 million deities, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है. whose name is joined with Shiva. जैसे कोई कंपनी बनाई जाती है Just like they organized some company, तो नाम लेते हैं फिर लगा देते हैं एंड सन्स कंपनी. they take the name and then they apply Ant Sons Company. तो ऐसे ही In the same way, ये नई दुनिया बनाने की कंपनी है. this is the company of creating the new world. इसमें शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है. The name of Shankar is joined with Shiva in it. भक्ति मार्ग वाले समझते हैं. क्या समझते हैं? Those on the path of the religious devotion think. What do they think? शिव शंकर एक ही है. Shiva and Shankar are just one. लेकिन हम बच्चों को पता है कि वो दो आत्माएं हैं. But we children know that they are two souls. क्या? What? आत्मा एक नहीं है. There isn't one soul. आत्माएं दो हैं. There are two souls. लेकिन दो आत्माएं होते हुए भी जो दूसरी आत्मा शंकर है वो लव में लीन हो जाती है, इसलिए एक हो जाती है. But despite that there are two souls, Shankar, who is the second soul, becomes immersed in love, and this is why he becomes one. क्या? ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है. What? It is not like this that a soul becomes immersed in the Supreme Soul. सभी आत्माएं परमात्मा में सदा काल के लिए लीन नहीं हो सकती. Not all the souls can become immersed in the Supreme Soul forever. ये तो सिर्फ संगम युग की बात है. It concerns only the confluence age कि एक आत्मा शिव परमात्मा परम पिता में जब तक संगम युग है तब तक के लिए लवलीन होकर के पार्ट बजाती है. that as long the confluence age lasts, one soul plays the role having become immersed in love in the Supreme Soul, the Supreme Father Shiva. इसलिए शिव शंकर का नाम मिलाई दिया है. For this reason, they mixed the names Shiva and Shankar. तो ब्रह्मा बाप ने जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं. So, Brahma the Father is giving to all of you who didn't see the corporeal Father the special remembrance and the love from the heart. तो याद प्यार और नमस्ते. So remembrance, love and greetings. दादियों से रतन मोहिनी दादी,
और दादी मनोहर इंदिरा से। With the daddies, with Ratan Mohini Dadi and Daddy Manoharindra. आप भी देखो। You also have a look. माने और दादियां तो देख ही रही हैं ये बात। It means that the other daddies can see this anyway. लेकिन आप भी देखो, रतन मोहिनी दादी और मनोहर दादी। But you also have a look. That means Ratan Mohini Dadi and Manohar Dadi. You also have a look. आप भी देखो, ऑल राउंड पार्ट बजाए रही हो ना। You are playing all-round part, aren't you? जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। As much you could do, number 1 in the service. आप तो शुरू से नंबर 1 ही रही हैं। You have been number 1 from the beginning. ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। Your name is in the heart of Brahma the Father. पिछली अव्यक्त वाणी में एक खास बात बताई मनोहर इंदिरा दादी के बारे में। क्या? In the previous Avyakt Vani, there was a special matter told about Manohar Indra Dadi. What? कि यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाने वाली मनोहर इंदिरा दादी है। That the one who tells the true history of the yagya is Manohar Indra Dadi. बाकी झूठ भी सुनाते हैं। The rest tell also lies. अपने स्वार्थ के अनुसार सुनाई देते हैं। They tell according to their selfishness. लेकिन सच्ची हिस्ट्री मनोहर इंदिरा दादी सुनाती है। But Manohar Indra Dadi tells the true history. तो सच्चे दिल पर साहब राजी। So the Lord is pleased with the true heart. तो नंबर 1 सेवा सच्चखंड स्थापन करने की है ना। The number 1 service is that of establishing the true land, isn't it? उसमें शुरू से नंबर 1 रही है। In this you have been number 1 from the beginning. ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। Your name is in the heart of Brahma the Father. कुछ भी हो। Whatever may happen. क्या? What? ड्रामा में कोई कुछ भी पार्ट बजाता रहे। Anyone may play any part in the drama. आप करते चलो। You carry on. देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। Looking at you, the others also become courageous. क्या? What? आप जिस हिम्मत से सच्चाई की बात बोलती हो, वो सच्ची बात सुन करके औरों को भी हिम्मत आती है। The others also become courageous having listened to the truth, which you tell with courage. नहीं तो? Otherwise? नहीं तो डर जाते हैं, पता नहीं हम सच्ची बात बोलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। Otherwise they are afraid. Who knows what our condition will be like if we say the truth? करावनहार साथ में है ही। The one who gets things done is together with you. आपसे आप हिम्मत करते हैं तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। You are courageous. So, himmate bacche madade bap. If the children are courageous, the father helps them. दादी जी से। With Daddy Ji. कौन दादी? Which daddy? प्रकाश मणि। Prakashmani. बहुत अच्छी। Very good. आप मुस्कुराती हो ना तो सभी खुश होते हैं। When you smile, all become happy. अभी एक बात करो। Now do one thing. करेंगी? Will you do it? करेंगी पक्का? Will you do it? Surely. अरे बाबा को कुछ संशय आ रहा है। Oh, Baba is doubting. करेंगी? पक्का? Will you do it? Surely. अभी खाना अच्छी तरह से खाओ। Now eat the food in the proper way. क्या? What? खाना अच्छी तरह से कब कब नहीं खाया जाता है? When isn't the food eaten in the proper way? हैं? The students are saying something. नहीं, रोजमर्रे के जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है
तो खाना पेट के अंदर नहीं जाता है। No, in the daily routine sometimes something happens like this, that the food doesn't go into the stomach. खाना अच्छी तरह से खाओ, Eat the food properly. आँख खोल के खाना खाओ, Eat the food with the eyes opened. बंद नहीं करो, Don't close them, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है ना, because your eyes close, don't they? तो सभी का संकल्प चलता है, क्यों किया? Then thoughts occur to everyone. Why did she do it? इन्होंने आंख बंद क्यों किया? Why did she close the eyes? इसलिए For this reason, अभी खाना बहुत प्यार से खाओ, eat the food with great love now. अभी आंखें बंद नहीं करना। Now don't close the eyes. ये काम करेंगी ना, You will do this work, won't you? ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। All of them will become very happy. आप खाना आंखें खोल करके खाना खावेंगी तो ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। If you eat the food with the open eyes, all of them will become very happy. ये है सब कौन? Who are all of them? हाँ, बेसिक वाले जो भी हैं, Yes, whoever are there in the basic, वो सब बहुत खुश हो जाएंगे। all of them will become very happy. हाँ करेंगी ना, You will say, yes, won't you? करना ये है, It has to be done. करना ये है। It has to be done. दादी शांतामणि, Dadi Shantamani. अरे वाह, Oh, wow. आपको याद है ना, You remember, don't you? आपको बाप दादा ने एक स्पेशल टाइटल दिया था। BapDada gave you one special title. सचली कौड़ी। The true shell. कैसी कौड़ी? What kind of a shell? सचली? सचली माने क्या? True. True means what? हाँ, सचली कौड़ी, झूठी कौड़ी नहीं। Yes, the true shell, not a false shell. एक होती है कौड़ी झूठी, One is a false shell. कोई ने झूठी कर दी हो, Someone might have used it. और एक होती है कौड़ी सच्ची। And one is the true shell. बाप दादा ने खास टाइटल दिया था। BapDada gave the special title. किसको? To whom? शांतामणि दादी को। To Dadi Shantamani. सचली कौड़ी। Sachli Kauri. उन दिनों में कौड़ी का भी महत्व था। Those days, even a shell had importance. पुराने जमाने की बात बताई, यज्ञ के आदि की। It is said about the old times of the beginning of the yajna. उन दिनों में कौड़ी का भी महत्व था। Those days, even a shell had importance. अभी तो कौड़ी की कोई कीमत नहीं। Now a shell doesn't have any value. सभी को दादियों को देख करके खुशी होती है ना। All become happy seeing daddies, don't they? क्या गीत गाते हो? What song do you sing? वाह दादियाँ वाह। Wah, daddies, wah. और ये वाह वाह नहीं होते, And if they went wah, wah, और यह वाह वाह नहीं होते, कौन? if they went wah, wah, who? आप गीत गाते हो ना, वाह दादियाँ वाह। You sing songs, don't you? Wah, daddies, wah. और यह वाह वाह नहीं होते, If they went wah, wah, तो आप भी नहीं होते। you wouldn't be either. कौन वाह वाह नहीं होते? हैं? If who went wah, wah, ये दादियाँ जिनके लिए गीत गाते हो, these daddies, for whom you sing songs, वाह दादियाँ वाह, wah, daddies, wah.
ये अगर वाह वाह नहीं होती, If there weren't wah wah, तो आप भी नहीं होते। you wouldn't be either. क्या मतलब हुआ? What's the meaning? आप कब हैं? When are you? आपका अस्तित्व कब है? जब दादियां हैं। When do you have an existence? Students are saying something. When the daddies exist. मना राजा है तो प्रजा का भी महत्व है। Meaning, when the king exists, the subjects have their importance. और राजा नहीं तो प्रजा का भी कोई महत्व नहीं। If the king doesn't exist, the subjects have no importance. इसलिए बोला था, For this reason, it was said, जो जिस धर्म का होगा ना, to which religion one belongs, तो क्या करेगा? what will he do? उसी की बात मानेगा, He will accept only the words of that one. क्योंकि है ही उसी धर्म का। It is because he belongs to just that religion. और वाह वाह भी किसकी करेगा? उसी की वाह वाह करेगा। To whom will he do? Wah, wah? He will do wah, wah to that one. इसलिए बोला, For this reason, it was said, आप सभी दादियों को देख करके खुशी होती है ना? all of you are happy seeing the daddies, aren't you? क्या गीत गाते हो? What songs do you sing? वाह दादियां वाह। Wah, daddies, wah. और ये वाह वाह नहीं होती तो आप भी नहीं होते। And if there weren't wah, wah, you wouldn't be either. मैंने आपका अस्तित्व महत्व तब तक है जब तक दादी है। That is to say, your existence, your importance is as long as the daddies are. ये नहीं रहेगी तो आपका महत्व भी नहीं रहेगा, आपकी दुनिया भी खलास हो जाएगी। कौन सी दुनिया खलास होने वाली है? If they don't remain, your importance won't remain. And your world will be finished off as well. Which world is going to be finished off? नहीं, Students are saying something. No. जो भी ब्राह्मणों की ऐसी दुनिया है जो अधूरे ब्राह्मण हैं सो अधूरे देवता बनते हैं। There is such a world of Brahmins who are incomplete Brahmins. So they become incomplete deities. सो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। And so from the Copper Age, they go to other religions. उनके लिए बोला। It was said for them. अच्छा, ओम शांति। All right. Om Shanti. मुरली चल रही थी। The Murli that was going on 11 जुलाई 1967 की। was dated July 11th, 1967. इसमें पहले पेज पर बात चल रही थी। On the first page in it, the matter was being narrated. इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था, When there was the kingdom of these Lakshmi and Narayan, तो विश्व में शांति थी। there was peace in the world. अभी किसका राज्य है? Now whose kingdom is there? जो अशांति है। So that there is restlessness. Students are saying of Ravan. इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। When there was the kingdom of these Lakshmi and Narayan, there was peace. और आज रावण का राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है तो अशांति है। And today there is the kingdom of Ravan, the kingdom of many heads, so there is restlessness. माने एक का राज्य होता है तो सुख शांति होती है। That is to say that if there is the kingdom of one, there is peace and happiness. और अनेकों का राज्य होता है तो दुख शांति हो जाती है। And if there is the kingdom of many, it becomes sorrow and restlessness. एक जैसे परिवार होता है। For example, there is a family. परिवार में अगर एक मुखिया की सब बात मानते हैं, If all in the family accept the opinion of one head,
तो सुख शांति है। there is peace and happiness. और एक ही परिवार में And if in one family एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, तीसरा तीसरी बात कहता है, one says one thing, the second says another thing, the third says third thing, जैसे आज परिवारों में देखा जाता है, just like it is seen in today's families. एक कांग्रेस को वोट देता है, One gives vote to the Congress. कांग्रेस का भगत है, तो दूसरा जनता पार्टी का भगत है, तीसरा समता पार्टी का भगत है, चौथा समाजवादी पार्टी का भगत। One is a devotee of the Congress, the second is a devotee of the Janta Party, the third is a devotee of the Samta Party, the fourth is a devotee of the Samajwadi Party. तो सबके मते अलग अलग हो जाते हैं। Everyone's opinion becomes different. सब लड़ते झगड़ते, All fight and quarrel. वाइब्रेशन ही एक दूसरे को तोड़ते रहते, दृष्टि ही बदल जाती। The vibrations keep destroying one another. The drishti gets changed. तो शांति का कारण क्या बताया? So what is told to be the reason for peace? एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। One opinion system, one kingdom, one language, one clan. तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, उनको हेवन डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। So in the kingdom of Lakshmi and Narayan, there was peace. It is called heaven, the deity world. दूसरा पेज 11 जुलाई 1960। The second page, July 11th, 1967. वहाँ पर विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। Over there, 5,000 years ago, there was peace in the world. सारे विश्व में शांति थी। There was peace in the entire world. भारत की बात नहीं है। It is not a question of just Bharat. क्या? सारे विश्व में शांति थी। विश्व किसे कहा जाता है? What? There was peace in the entire world. What is called the world? जहाँ विश्व धर्म हो, Where there are worldly religions. विश्व के सभी देश मौजूद हों, All the countries of the world are present. ये बातें और कोई नहीं जानते। No one else knows these topics. मुख्य बात ये है, This is the main topic. सब आत्माएं मिलकर कहती हैं All the souls meet and say, कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। how would peace be established in the world? अभी आत्माएं पुकारती हैं, Now the souls cry out, और तुम बच्चे यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हो। and here you children are making efforts. कहेगा For what? आत्मा शांत स्वरूप बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। You are making efforts to become a soul, a form of peace. शांति की दुनिया स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। You are making efforts to establish the world of peace. शांति का वाइब्रेशन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। You are making efforts to create the vibration of peace. विश्व में शांति स्थापन करनी ही है। Peace has to be established in the world. तो बोलो कि भारत में शांति थी ना। So speak, there was peace in Bharat, wasn't there? सतयुग में शांति थी और कलयुग में अशांति है। There was peace in the golden age, and there is restlessness in the iron age. ऐसा क्यों है? Why is it like this? क्योंकि अनेक राज्य हैं। It is because there are many kingdoms. माया का राज्य है ना। It is the kingdom of Maya, isn't it? माया रावण कहा जाता है। It is said, Maya, Ravan. रावण को 10 सिर है ना। Ravan has 10 heads, hasn't he? 10 मतों का राज्य है। It is the kingdom of a system of 10 opinions. एक मत नहीं है। There isn't just one opinion. भक्ति का भी देखो कितना पंप है। Look, there is so much pomp of devotion. भक्ति इस रावण से आती है। The devotion comes from this Ravan.
और ज्ञान एक बाप से आता है। And knowledge comes from one father. अभी इस पंप एंड शो की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। Now this pump and show increase day by day. ये पंप एंड शो This pump and show जो 5000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम 100-200 साल के अंदर बढ़ता है, increases within the last 100-200 years of the 5,000 years drama. अभी अंत समय में दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती जाती है, दिन दूना रात चौगुना। Now, at the final time, it increases day by day, multiplies day and night. मनुष्य भी मेले मलाखड़ों पर जाते हैं, The human beings go to fairs and exhibitions. तो समझते हैं कि यहाँ जाने से जरूर पुण्य होगा। So they think that certainly there will be merits from going there. इतने लोग जाते हैं। So many people go there. इन मेले मलाखड़ों का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? Where is the foundation of these fairs and exhibitions laid? ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको अल्प नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वालों में ये मेले मलाखड़े बहुत चलते हैं। These fairs and exhibitions flourish in the Brahmin world of those who have incomplete knowledge among those in the basic knowledge. मेले भी चलते हैं, सम्मेलन भी चलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी चलती हैं, मेगा प्रोग्राम चलते हैं। The fairs flourish, the gatherings flourish, the conferences flourish, the mega programs flourish. तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो लोग क्या समझते हैं? Therefore, great crowd gathers. So what do people think? इन मेले मलाखड़ों में जाने से जरूर कुछ पुण्य होता होगा। That there would certainly be some merits in going to those fairs and exhibitions. अभी तुम समझते हो। Now you understand इन मेले मलाखड़ों से कोई पावन नहीं बन सकता। that no one can become pure through these fairs and exhibitions. मेलों में तो जो भी पहुंचते हैं, Whoever arrives to the fairs, वहाँ भगवान तो होता नहीं। God is actually not there. पतित पावन बाप तो वहाँ होता नहीं। The Father, who purifies the impure, is not there. सब मेले ही मेले इकट्ठे होते हैं। Only the completely dirty are gathered there. तो वाइब्रेशन कैसे बन जाते हैं? Then how does the vibration become like? मेले वाइब्रेशन बन जाते हैं। The vibrations become dirty. दृष्टि वृत्ति दोनों ही पतित बन जाती है। Both the drishti and the vritti become impure and degraded. पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई भी नहीं बता सकते। No human being can tell the way to become pure. माना That is to say, पावन बनने का रास्ता कौन बता सकता है? who can tell the way to become pure? जो एवर प्योर है वो ही पतितों को पावन बनाने का रास्ता बता सकता है। Only the one who is ever pure can tell the way of purifying the impure. और एवर प्योर जहाँ नहीं है, And where the ever pure is not present, कहाँ नहीं है? where is he not present? ब्राह्मणों की दुनिया में टैली करना पड़े। One would have to make comparisons in the world of Brahmins. अगर है If he is present there, तो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताता होगा। he will tell the sinful ones the way to become pure. अगर नहीं है If he is not present, तो उस दुनिया को then that world पतित से पावन बनने वाली दुनिया नहीं कहेंगे। won't be called the world becoming pure from impure. पतन के गर्त में जाने वाली दुनिया है। It is the world leading to the chasm of downfall. क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। It is because there is only one Father who purifies the impure. दो नहीं हो सकते। There cannot be two. एक ही है He is only one, और एक ही टाइम पर आता है।
and he comes only once. और पतित पावन बाप एक बार ही आता है. The Father who purifies the impure comes only once. आता है मन What does it mean that he comes? प्रत्यक्ष होता है. He is revealed. यज्ञ के आदि में नहीं आया था क्या? Didn't he come at the beginning of the yagya? आया था, He did. लेकिन But प्रत्यक्ष नहीं था, तो किसी को मालूम ही नहीं था, तो कोई याद कैसे करे? he wasn't revealed, so no one knew. Then how would anyone remember him? याद नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, तो संग का रंग ले भी नहीं सकता. No one could remember, no one could know. So they couldn't take the color of the company either. अभी दुनिया तो एक ही है. The world is just one. सिर्फ उसको ही नई और पुरानी कहा जाता है. It is just called new and old. नई दुनिया में नया भारत और नई दिल्ली कहते हैं. In the new world, they say New Bharat and New Delhi. जरूर है कि नई दिल्ली तो पहले भारत में ही होगी Certainly, New Delhi will be first in Bharat. और पुराने भारत में होगी Will it be in old Bharat या नए भारत में होगी? or in New Bharat? नए भारत में होगी. It will be in New Bharat. दुनिया की हर चीज पहले Everything in the world first सतो प्रधान नई is Sato Pradhan, new. और बाद में तमो प्रधान पुरानी होती है. And later it is Tamo Pradhan, old. भारत में भगवान आते हैं. God comes in Bharat. तो जिस भारत में भगवान आते हैं वो तमो प्रधान पुराना होता है. So is Bharat, where God comes, impure and old, या नया होता है सतो प्रधान? or is it new, pure? पुराना भारत होता है. Bharat is old. तमो प्रधान होता है. It is Tamo Pradhan. तमो प्रधान में भगवान आकर के उसको सतो प्रधान भारत बनाते. God having come into the impure Bharat makes it pure Bharat. जब सतो प्रधान भारत बनता है तो जरूर When Bharat becomes Sato Pradhan, then certainly वहाँ की राजधानी दिल्ली भी सतो प्रधान बनती है. the capital over there, Delhi, becomes Sato Pradhan as well. पहले दिल्ली कब्रिस्तान, First, Delhi is a graveyard. बाद में दिल्ली परिस्तान. Later on, Delhi is the land of fairies. कब्रिस्तान है तो तमो प्रधान है. When it is a graveyard, it is Tamo Pradhan. और परिस्तान है तो दिल्ली सतो प्रधान. When Delhi is the land of fairies, it is Sato Pradhan. तो वहाँ नई दुनिया में तो सब कुछ नया है. So over there, in the new world, everything is new. ये मथुरा, ये वृंदावन आदि कोई नए नहीं है. This Mathura, this Vrindavan, and so on, are not any new. कौन से? Which? जो स्थूल रूप में हद की दुनिया में दिखाए गए हैं, जहाँ भक्त लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं. Those which can be seen in the physical form in the limited world, where the devotees go on pilgrimage. ये मथुरा, ये वृंदावन आदि कोई नए नहीं है. This Mathura, this Vrindavan, and so on, are not any new. ये नई होनी है, They have to become new, जिसमें ही फिर नया राज्य होगा. where there will be the new kingdom then. यहाँ पर तो पुरानी दुनिया में पुराना ही राज्य है. Here, in the old world, there is the old kingdom. पुरानी और नई दुनिया किनको कहा जाता है? ये दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम जानते हो. In the world, no one knows what is called the old and the new world. You know it. नई दुनिया जहाँ एक का राज्य होता है. The new world, where there is the kingdom of one. और पुरानी दुनिया जहाँ अनेकों का राज्य होता है. And the old world, where there is the kingdom of many. अनेकों प्रजा होती है या राजा होते हैं? Are there numerous subjects or kings? अनेकों प्रजा होती है. There are numerous subjects. तो अनेक प्रजा का अनेकों के ऊपर
राज्य होता है उसे कहते हैं प्रजा का ऊपर प्रजा के प्रजा का राज्य। Therefore, there is the kingdom of many subjects over many. It is called the kingdom of the subjects over the subjects. मनुष्य तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद दुनिया नहीं होगी। People think that after 40,000 years, the world will become new. अज्ञान की नींद में है ना, क्यों? They are in the sleep of ignorance. Why? अब ही इतना दुख है, Right now, there is such sorrow कि इस दुनिया में कोई भी करोड़पति अरबपति सुखी नहीं है। that in this world no millionaire, multimillionaire is happy. कोई कह नहीं सकता कि हम तन से मन से धन से सदा सुखी रहते। No one can say that we remain always happy through the body, through the mind, through the wealth. अभी भी दुख है, Right now, there is sorrow. और इतना दुख है And there is such sorrow कि 1% लोग कहने वाले हैं कि हम सदा सुखी रहते हैं। that 1% people say that we are always happy. और बाकी 99% सब दुखी हैं। The remaining 99% are all sorrowful. गरीब गरीब होते जाते, दुखी होते जाते, The poor become poorer. They become sorrowful. और अमीर अमीर होते जाते। And the rich become richer. अज्ञान की नींद में है ना कि सुख शांति की दुनिया कौन सी होती है। They are in the sleep of ignorance regarding which world is peaceful and happy, aren't they? सुख की दुनिया जो बाप बनाते हैं वह होती है जहाँ कोई भी दुखी नहीं होता। The happy world which the Father creates is that where no one is sorrowful, कोई भी अशांत नहीं होता। no one is restless. अभी तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग का कितना फैलाव है। Now you children know how much the path of the religious devotion has spread. उनको कहा जाता है अज्ञान। That is called ignorance. ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। Only one Father is the ocean of knowledge. बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो। The Father doesn't tell you like this. Say Ram Ram वह ऐसे माला आदि फेरो, नहीं। and rotate the mala and so on. No. बच्चों को समझाया जाता है क्या? It is explained to the children. What? कि राम राम कहने का मतलब क्या है? What is the meaning of saying Ram Ram? कोई का नाम रटते हैं भक्ति मार्ग में, इसका क्या अर्थ है? They repeat someone's name on the path of the religious devotion. What's its meaning? नाम लेने के पीछे राज क्या है? What is the secret behind mentioning the name? राज है The secret is कि जिसका नाम लिया जाता है उसने जरूर कोई काम किया है। that the one whose name is mentioned must have done some work. भगवान के अनेक नाम लिए जाते हैं। God is given many names. उन सब नामों का कोई अर्थ है। All those names have some meaning. अर्थ के अनुसार उन्होंने काम किए हैं। He has done work according to the meaning. राम राम नाम लेते हैं तो क्या काम किया होगा? They mention the name Ram Ram. What work must have he done? राम रमण करता है। Ram delights. हरेक के दिल में रमण करता है। He delights everyone's heart. हरेक के दिल को खुश करता है, जैसे खेलते हैं ना। He makes everyone's heart happy, just like they play games. तो खेल खेलने में दुख होता है या खुशी होती है? खुशी होती है। Is there sorrow in playing games or is there happiness? There is happiness. ऐसे ही राम ने जो राजयोग का खेल खिलाया, Similarly, Ram, who had the game of Raj Yoga played, वो खेल ऐसा खिलाया जिसमें हर दिल खुश में खुशी खुशी में नाचता था।
He had it played in such a way that every heart used to dance in happiness. इसलिए राम के नाम का गायन है. For this reason, there are the songs praising the name Ram. वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तुम जानते हो. You know how the world history and geography repeats. यही एजुकेशन तुम पा रहे हो. You are receiving this education. इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन. Its name is the spiritual education. स्पिरिचुअल नॉलेज. The spiritual knowledge. उसका अर्थ भी कोई नहीं जानते. No one knows its meaning either. स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है. The soul is called the spirit. आत्मा की नॉलेज सिवाय आत्मिक बाप जो रूहानी बाप है उसके कोई दे ही नहीं सकता. Except for the spiritual father, no one can give the knowledge about the soul. ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है. Only one father is called the ocean of knowledge. वो स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर है. He is the spiritual father, full of knowledge. तुम देह से बात नहीं करते हो. You don't talk to the body. तुम किससे बात करते हो? आत्माओं से बात करते हो. Whom do you talk to? You talk to the souls. जिस्मों से तो तुम बात नहीं करते हो. You don't talk to the bodies. रूहानी रूह पढ़ाते हैं. The spiritual spirit teaches. उस दुनिया में तो मनुष्य जिस्म से बात करते हैं. In that world, the human beings talk to the body. देह अभिमानियों से बात करते हैं. और तुम? They talk to the body conscious. And you? रूहों से बात करते हो. You talk to the spirits. रूहानी रूह ही पढ़ाते हैं. It is the spiritual spirit who teaches. तो बाप तो रूहों से ही बातें करते हैं. So, the father talks only to the spirits. क्या कहा? What was said? कोई देह अभिमानी हो तो उनसे बाप बातें ही नहीं करते. If some are body conscious, the father doesn't talk to them. मुरली में तो बोला है मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम बच्चों से बात करता हूँ. It was said in the Murli, I teach you children, I talk to you children. ये तो बीच में सुन लेता है. This one here just listens in between. माना? Meaning? A student, he doesn't talk to Brahma. ब्रह्मा से बात नहीं करते, उनको नहीं पढ़ाते. क्यों? Doesn't he talk to Brahma? Doesn't he teach him? Why? क्योंकि शिव के मंदिर में जो बैल दिखाया जाता है वो जानवरियत की निशानी है. Because the bullock, which is shown in the temple of Shiva, is an indication of the nature of an animal. जैसे कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना. Just like they say, to cast pearls before swine. सुप्रीम सोल बाप आकर इतनी ऊंची नाली जो सुनाते हैं उसका मर्म, उसकी गहराई बैल नहीं समझ सकता. A bullock can't understand the core, the depth of such an elevated knowledge which the Supreme Father Shiva gives when he comes. इसलिए कहते हैं जानवर बुद्धि. For this reason, it is said, the animal-like intellect. तो मैं इनसे बात नहीं करता हूँ. So, I don't talk with him. बात तुम बच्चों से करता हूँ. I talk to you children. तुम बच्चे कौन? You children, who are you? जो आत्मा अभिमानी है. Those who are soul conscious. मैं आत्मा ज्योति बिंदु. I am a soul, a point of light. और मेरा बाप ज्योति बिंदु. And my father is a point of light. क्यों? Why? ब्रह्मा के लिए ऐसे क्यों? Why is it said like this for Brahma? इसलिए बोला It was said like this because कि इतने लंबे समय से बोलते चले आ रहे हैं he has been saying for such a long time कि एक ही बड़ी से बड़ी भूल हो गई.
that the biggest mistake happened जिससे भारत नीचे गिर गया, वो कौन सी भूल है? because of which Bharat fell down. Which is that mistake? गीता का भगवान कृष्ण नहीं, Krishna is not the god of the Gita. गीता का भगवान कृष्ण नहीं। Isn't Krishna the god of the Gita? और भगवान कौन से युग में आता है? And in which yuga does God come? संगम में आता है। He comes in the confluence age. तो संगम युग में जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, वो कृष्ण की सोल नहीं होती क्या? So isn't Krishna's soul the one who is called Brahma in the confluence age? संगम युग में क्या साकार कृष्ण होता है? Does the corporeal Krishna exist in the confluence age? साकार कृष्ण तो होता नहीं, कृष्ण की सोल होती है। The corporeal Krishna doesn't exist. There is the soul of Krishna. तो फिर साकार में गीता का भगवान कौन? Then, who is the god of Gita in the corporeal? तो बैल की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? This issue doesn't sit in the bullock's intellect. Why doesn't it sit? क्यों नहीं बैठती? Why doesn't it sit? इसलिए नहीं बैठती कि जो आत्मा 63 जन्म लगातार सुनती चली आई हो, It doesn't sit in it for the reason that that soul, who has been continuously hearing for 63 births, कि गीता का भगवान कृष्ण है that the god of the Gita is Krishna, और स्वयं ही कृष्ण की आत्मा हो, तो उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? and is himself the soul of Krishna. What will sit in his intellect? कि गीता का भगवान मैं ही हूँ या कोई दूसरा है? Is it just I who is the god of the Gita, or someone else? गीता का भगवान वो खुद ही हुआ। He himself became the god of the Gita. उनकी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि गीता का भगवान कोई साकार में दूसरा व्यक्ति हो सकता है। It can't come into his intellect that the god of the Gita in the corporeal can be some other person. न बुद्धि में ये बात बैठती है और न दूसरों को बुद्धि में ये बात बिठा सकते हैं। Neither this issue sits in the intellect, nor can he make this issue sit in the intellects of the others. भले चित्र बनाया गया, It doesn't matter that the picture was made. कंट्रास्ट दिखाओ। Show the contrast. क्या कंट्रास्ट दिखाया? What contrast was shown? एक तरफ शिव का लिंग दिखाई दिया। On one side, they showed the lingam of Shiva. क्या लिख दिया उस पर? गीता का भगवान। And what was written on it? The god of the Gita. और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दिखाई दिया। And on the other side, they showed the picture of Krishna. गीता का निराकार भगवान और गीता का साकार भगवान। The incorporeal god of the Gita and the corporeal god of the Gita. अब ये बात तो नहीं बुद्धि में बैठी But it didn't sit in the intellect. कि जो लिंग का चित्र दिखाया है वो वास्तव में किसकी यादगार है? Whose memorial is presented in the picture of the lingam in reality. बिंदु की यादगार है Is it the memorial of the point? या साकार स्वरूप की यादगार है? Or is it the memorial of the corporeal form? ऐसा साकार स्वरूप जिसको कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई है। Such a corporeal form whose organs haven't been shown. हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई गए। The hands, the legs, the nose, the eyes, the ears haven't been shown. सिर्फ लिंग दिखाया गया है। Only the lingam has been shown. और लिंग में बिंदु दिखाया गया है। And in the lingam a point has been shown. तो बिंदु किसकी यादगार है? So whose memorial is the point? Students of Shiva. बिंदु है निराकार ज्योति बिंदु शिव की यादगार। The point is the memorial of the incorporeal point of light Shiva, जिसे गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। who is called God or Bhagwan. और वो बिंदु जिसमें प्रवेश करता है
लिंग रूप में, and the one whom that point enters, the form of a lingam, वो है साकार स्वरूप, is the corporeal form, जो अपनी इंद्रियों के भान को भूल जाता है। the one who forgets the consciousness of his organs. उस इंद्रियों के भान को भूलने की स्टेज, The stage of forgetting the consciousness of those organs वो लिंग में दिखाई देती है। is shown in the lingam. इसलिए For this reason, भारत का जो पहला मंदिर बना था, सोमनाथ मंदिर, in the first temple which was made in Bharat, the Somnath temple, उसमें लाल पत्थर शिवलिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था। a diamond was inlaid in the center of the red stone lingam. उससे साबित होता है It is proved by this कि द्वापर के आदि में जो भी मनीषी विद्वान आचार्य थे, that the scholars, the teachers, the sages who were there at the beginning of the Copper Age, जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा, who had got that temple built through King Vikramaditya, उनकी बुद्धि में ये बात थी क्या? they had in their intellects that issue. What? कि वो निराकार शिव प्रवेश करके किसी साकार तन के द्वारा पार्ट बजाता है। That incorporeal Shiva enters someone's body and plays the part. और ऐसा पार्ट बजाता है जैसे आंखें होते हुए भी न देखना, कान होते हुए भी जैसे न सुनना, इंद्रियां होते हुए भी जैसे इंद्रियों का भोगा न भोगा, वो अभोक्ता कहा जाता है। And he plays such a part as if he had the eyes, yet he didn't see, had the ears, yet he didn't hear. Despite having the organs, it becomes the same whether he experienced or he didn't experience the pleasures of the organs. He is called the one beyond the experience. ऐसे नहीं कि साकार तन में प्रवेश करके साधारण तन में प्रवेश करके कर्म नहीं करता। It is not like this that having entered the corporeal body, having entered the ordinary body, he wouldn't perform the actions. साधारण तन में प्रवेश करेगा तो साधारण कर्म भी करेगा जैसे दुनिया करती। He enters the ordinary body, so he must perform the ordinary actions, just like the world does. लेकिन उन कर्मों में आत्मा लिम्पायमान नहीं होती जैसे कमल फूल। But the soul doesn't cling to those actions, just like the lotus flower. कमल फूल कीचड़ में डुबो दिया जाए और बाहर निकाला जाए तो एक ही भी बूंद कीचड़ की नहीं रहती। If the lotus flower would be put into the mud and taken out, not even one drop of mud will remain. ऐसा पार्ट बजाता है। He plays such a part. इसलिए उसको लिंग के रूप में दिखाया। For this reason, he was shown in the form of the lingam. ये बात की गहराई, The depth of this matter, कृष्ण के अंतिम जन्म के रूप में जो पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा है, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। doesn't sit in the intellect of the one who plays the role in Krishna's last birth's form, Dada Lekraj, Brahma. इसलिए कहा भक्ति मार्ग में दिखाया गया कि शिव के मंदिर में कौन दिखाते हैं? बैल भी दिखाते हैं। For this reason, it was said, it is shown on the path of the religious devotion. Whom do they show in the temple of Shiva? They show also the bullock. वो बैल किस तरफ दिखाते हैं? Towards which side is that bullock shown? Students outside. नहीं, बाहर भी दिखाते हैं, अंदर भी दिखाते हैं। No, it is shown outside as well as inside. जहाँ जलाधारी रखी होती है, वहाँ नाली का मुंह जिस तरफ होता है, उस तरफ बैल दिखाते हैं। Where there is the Jaladhari, the bullock is shown towards that side,
towards which the mouth of the drain is. माना बैल की बुद्धि कहाँ लगी हुई है? Meaning, what is the intellect of the bullock engaged in? वो नारी तन में लगी हुई है। It is engaged in the female body. इसलिए वो देहाभिमानी बुद्धि होने के कारण For the reason of having the body conscious intellect, वो पहचान नहीं सकता ज्ञान के मर्म को। he can't recognize the essence of knowledge. और जिस क्षण ये बुद्धि में बात बैठ जाती है कि गीता का भगवान दादा लेकर आदि कृष्ण नहीं, And the moment when this topic sits in the intellect that the God of the Gita is not Dada Lekrach Krishna, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं, it is not Krishna, alias Brahma. कौन है? Who is it? शिव शंकर भोलेनाथ है। It is Shiv Shankar Bholenath. उसी क्षण ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। In that very moment, Brahma becomes Vishnu. अभी भी ब्रह्मा सो विष्णु बनने का क्षण नहीं आया है। Right now, the moment of becoming Vishnu from Brahma hasn't arrived. तो बोला So it was said, रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं, the spiritual father talks with the spirits. देह अभिमानी सांडों से बात He doesn't talk with the body conscious bulls. सांडा किसे कहा जाता है? Who is called a bull? बैल को ही सांडा कहा जाता है। Students, a bullock. A bullock is called bull. परंतु रूहानी बाप रूहों से जो बात करते हैं वो बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। Those topics about which the spiritual father talks with the spirits are not mentioned in any scriptures. क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो मनुष्य कैसे समझे कि गीता का ज्ञान किसने दिया? It is because they inserted the name of Krishna in the Gita. So how would people understand who gave the knowledge of the Gita? तुम बच्चे समझते हो कि रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं ये स्पिरिचुअल नॉलेज। You children understand that the spiritual father teaches us this spiritual knowledge. शास्त्रों में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। The spiritual knowledge is not in the scriptures. शास्त्र लिखने वाले कौन हैं? Who are those who write the scriptures? मनुष्य। Human beings. और मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? And are the human beings vicious or are they without vices? मनुष्य तो विकारी होते हैं। The human beings are certainly vicious. तो विकारी मनुष्य जो होंगे वो देह अभिमानी होंगे या आत्मा अभिमानी होंगे? देह अभिमानी। So will the vicious human beings be body conscious or will they be soul conscious? Body conscious. देह अभिमानी मनुष्य जरूर दूसरों को भी देह अभिमानी बनाने का ज्ञान ही सुनावेंगे। Certainly, the body conscious human beings will tell others only the knowledge which makes body conscious. स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते। They can't give the spiritual knowledge. ये तुमको बाप से मिलती है क्या? This you receive from the Father. What? स्पिरिचुअल नॉलेज। The spiritual knowledge. रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। The knowledge about the spirit is called the spiritual knowledge. रूहानी बाप के पास ही रूहानी नॉलेज है। Only the spiritual father has the spiritual knowledge. उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज और कोई भी मनुष्य मात्र के पास नहीं है। क्यों? No other human being has that knowledge that he has. Why? मनुष्यों की पैदाइश हुई है मनु से। The human beings are born from Manu. मनुष्य सब किसकी औलाद है? मनु की औलाद। Whose progeny are all the human beings? The progeny of Manu. मनु किसको कहा जाता है? Who is called Manu? जिसका मन बहुत बलवान हो। The one whose mind is very powerful. और बाप जो राजयोग आकर सिखाते हैं वो राजयोग में मन को अमन बनाया जाता है। And does the Raja Yoga, which the Father teaches when he comes,
make the mind peaceful? या मन को चंचल बनाया जाता है? Or does it make the mind unsteady? आत्मा ऐसी बने कि मन मर्ज हो जाए. The soul should become such that the mind would get merged. देवताओं का मन चलेगा क्या? Will the mind of deities move? देवताओं का मन चंचल होता ही नहीं. The mind of the deities is not unsteady. और अभी And now, हम मनुष्यों का मन चंचल होता है. our human mind is unsteady. मन की चंचलता बिल्कुल रुक जाए. The unsteadiness of the mind should come to an end completely. मैं आत्मा ज्योति बिंदु. I, a soul, a point of light. मेरा बाप ज्योति बिंदु. My father, a point of light. बल साकार में आया हुआ है. Even if he has come into the corporeal. जिस साकार में आया हुआ है वो भी ज्योति बिंदु. The one in whom he has come is also a point of light. वो भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बाप समान. He is also incorporeal, without vices and ego, equal to the Father. ऐसी स्टेज जब बनती है तो फिर उसको मनुष्य नहीं कहा जाता. When one's stage becomes like this, then one isn't called a human being. उसका मन अमन हो गया, जैसे मन है ही नहीं. His mind became peaceful, as if there isn't a mind. बाबा ही स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल रूह है. Baba is the spiritual father, the spiritual spirit. सुप्रीम रूह है. तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा बिंदी है. The supreme spirit. You children know that the soul is a point. वो बिंदी हमको पढ़ाते हैं. That point teaches us. हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं. The Father teaches us, souls. बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप. The Father of the point-like souls. तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है कि हमको दादा लेखराज ब्रह्मा पढ़ाते हैं. It isn't in your intellect that Dada Lekrach Brahma teaches us. भले उनके मुख से नॉलेज निकली, लेकिन पढ़ाते कौन हैं? All right. Even if knowledge emerged from his mouth, but who teaches? शिव बाप पढ़ाते हैं. जिनकी बुद्धि में ये बैठा है कि ये देहधारी पढ़ाता है. The Father Shiva teaches those in whose mind it got fixed that the bodily being teaches. तो अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं. Remain completely ignorant. देह भान आ जाता है. They become body conscious. और जिनकी बुद्धि में ये आता है And those in whose intellects it comes, कि मैं रूहानी बाप की गोद में जाता हूँ. I go to the lap of the spiritual father. रूहानी बाप से पढ़ता हूँ. I learn from the spiritual father. मुखवंशावली हूँ. I am the mouth-born progeny. मैं कोई कोख से पैदा होने वाला कोखवंशावली नहीं हूँ. I am not anyone born from the womb-born progeny. कोख कहते हैं गोद. The lap is called the womb. गोद देह का अंश है. The lap is a part of the body. तो So, जो देह अभिमानी है उनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं बैठती. this knowledge doesn't sit in the intellect of those who are body conscious. उन देहवानियों से मैं बात नहीं करता. I don't talk with the body conscious ones. और आत्मा अभिमानियों से मैं बात करता हूँ. I talk with the soul conscious ones. जो समझते हैं कि मुझको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है. Those who understand that the one who teaches me is not any bodily being. मुझको पढ़ाने वाला The one who teaches me is कौन है? who? बिंदु. The point. ज्योति बिंदु शिव. The point of light Shiva. तो भूलना नहीं चाहिए. So one shouldn't forget. क्या नहीं भूलना चाहिए? What shouldn't one forget? कि पढ़ाने वाला रूहानी बाप है. That the one who teaches is the spiritual father. पढ़ाने वाला कोई देहधारी राम और कृष्ण हमको नहीं पढ़ाते हैं. No bodily being
whether Ram or Krishna teaches us. पढ़ाने वाला कौन है? रूहानी बाप. Who teaches us? The spiritual father. जो रूहानी बाप भी बनता है. That spiritual father becomes the father. वो रूहानी बाप टीचर भी बनता है. That spiritual father becomes the teacher too. सदगुरु भी बनता है, माता भी बनता है. He also becomes the true guru, and he becomes the mother as well. सर्व संबंध उस बाप के साथ है जरूर. All the relationships are certainly with that father. लेकिन संबंध साकार शरीर के द्वारा निभाए जाते हैं. But the relationships are maintained through the corporeal body. संबंध माने सम माने समान. The relationship means sam means equal. बंध माने बंधन. Band means a tie. एक बिंदी हो If one would be a point और एक साकार हो and the other would be corporeal, तो बंधन बनेगा, संबंध बनेगा. will the tie be formed? Will the relationship be formed? बन ही नहीं सकता. It can't be formed. जैसे लौकिक दुनिया में Just like in the world, एक सड़क का भिखारी हो, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं. one is a street beggar. He is completely penniless. कोई घर बार नहीं. He doesn't have any house. और एक अरबपति है. The other is a millionaire. तो अरबपति अपनी बेटी बेटों का संबंध उस गरीब के साथ जोड़ सकेगा क्या? So, will that millionaire be able to build the relationship of his children with that poor one? और वो संबंध जुड़ भी जाए तो वो चल सकेगा क्या? चल ही नहीं सकता. And even if that relationship would be formed, will it be able to go on? It can't go on. तो संबंध का मतलब है समान बंधन. So the relationship means the equal tie, संपूर्ण बंधन. the complete tie. सम माने संपूर्ण, सम माने समान. Some means complete, some means equal. वो साकार में ही होता है. It is in the corporeal. वो बाप आकर के That father having come, वो ज्योति बिंदु बाप जैसे गीता में लिखा है. that father, the point of light, just like it is written in the Gita, प्रवेशतुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ. Praveshtum, I am capable to enter. तो वो प्रवेश करके सर्व संबंध निभाता है बच्चों के साथ. So, having entered, he maintains all the relationships with the children. लेकिन बच्चों की बुद्धि में क्या होना चाहिए? But what should be in the intellect of the children? कि हम जिसके साथ संबंध निभाते हैं, कोई भी संबंध, That the one with whom we maintain the relationship, any relationship, वो संबंध निराकार से निभा रहे हैं या कोई साकार के साथ निभा रहे हैं. that relationship is maintained with the incorporeal. Or are we maintaining with some corporeal being? हैं? निराकार के साथ उस साकार यंत्र के द्वारा निभा रहे हैं. Students, with the incorporeal, we are maintaining it with the incorporeal through that corporeal machine. जैसे कोई भाषण करने वाला बोलता है लाउड स्पीकर के द्वारा. For example, some lecturer speaks. He speaks through a loudspeaker. लाउड स्पीकर में से आवाज आती है. The voice comes from a loudspeaker. तो क्या लाउड स्पीकर हमको सुना रहा है? So, is the loudspeaker talking to us? सुनाने वाला कौन है? Who talks? आत्मा. A soul. यंत्र तो नहीं है. It is not a machine. तो शरीरधारी So the bodily being, जिसका वो यंत्र है, वो हमको पढ़ाने वाला नहीं है. whom that machine belongs to, doesn't teach us. पढ़ाने वाला कौन है? Who teaches? सुप्रीम सोल, The Supreme Soul, निराकार ज्योति बिंदु शिव. incorporeal point of light Shiva. तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए. So, one shouldn't forget this matter. असल बात ये है The principal fact is this, कि वो हमारा सुप्रीम बाप है, that he is our Supreme Father, जिसका कोई बाप नहीं. who doesn't have any father. कौन? Who? शिव सुप्रीम सोल.
Shiva, the Supreme Soul. प्रजापिता भी उसका बाप नहीं हो सकता, वो प्रजापिता का बाप है. Even Prajapita can't be his father. He is the father of Prajapita. लेकिन But सुप्रीम सोल का कोई बाप, वो बापों का बाप है. the Supreme Soul doesn't have any father. He is the father of the fathers. वो टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर है. He is also the teacher of the teachers. He is the supreme teacher. प्रजापिता टीचर है, Prajapita is a teacher, लेकिन उसका भी कोई टीचर है. but he also has some teacher. रामकृष्ण का भी कोई टीचर है. कौन है? शिव. Ram and Krishna also have some teacher. Who is he? Shiva. जिनकी बुद्धि में रामकृष्ण बैठ जाते हैं, जिनकी बुद्धि में प्रजापिता बैठ जाता है, और उससे ऊपर वाली हस्ती उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं, उनसे मैं बात नहीं करता. I don't talk with those in whose intellects Ram and Krishna are fixed, in whose intellects Prajapita is fixed, and into whose intellects no higher personality comes. मैं किससे बात करता हूँ? Whom do I talk to? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं. The spiritual father talks to the spiritual children. हम आत्माओं को जो नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज हम फिर दूसरी आत्माओं को देते हैं. We give to the other souls the knowledge which we souls receive. ये नॉलेज तब बुद्धि में ठहरेगी जबकि अपने को आत्मा समझे. This knowledge will remain in the intellect when we consider ourselves to be souls, आत्माओं के बाप की याद में रहेंगे. and will remain in the remembrance of the father of the souls. याद में बहुत बच्चे झट देहाभिमान में आ जाते हैं. In remembrance, many children immediately come into body consciousness. देही अभिमानी बनने की अभी प्रैक्टिस करनी है. Now the practice of becoming soul conscious must be done. फिर ये प्रैक्टिस और कोई जन्म में नहीं होगी. Then this practice will not take place in any other birth. कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा समझने की. Which practice? Of considering the self to be a soul. देवताएं भी ये प्रैक्टिस नहीं करते. उनकी तो ऑटोमेटिक ये अवस्था बनी हुई रहती है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कहेंगे उसे. The deities don't do this practice either. Their stage remains just naturally, but it won't be called practice. द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई भी जन्म में ये प्रैक्टिस कोई भी देहधारी धर्मगुरु नहीं कराता. क्या? No religious guru makes this practice in any birth, starting from the copper age till the end of the iron age. कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु. That we are points of light, and our father is a point of light as well. ये सिर्फ इसी एक जन्म में, और वो भी थोड़े टाइम के लिए, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है. Only in this life, and it is for a little time that this issue gets into your intellect. तो हम आत्मा सब कार्य करती हूँ. मैं आत्मा इनको सौदा देती हूँ. So we souls do all the work. I, soul, make a deal with him. हम आत्मा व्यापार करती हूँ. I, soul, do business. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहने में ही फायदा है. There is benefit just in considering the self to be a soul and remembering the father. आत्मा को का ही ज्ञान है. The soul has the knowledge about itself कि हम यात्रा पर हैं. that I am on pilgrimage. कर्म तो करना ही है. क्या? One just has to perform the action. What? जब तक कर्मेंद्रियां हैं, As long as there are organs of action, कर्मधारा तो चलेगी. the flow of action will go on. कर्मधारा से कोई रुक नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं? No one can stop himself from the flow of the action. But what can he do? कर्म करते हुए मन को अमन बना सकते हैं. He can make the mind peaceful.
while performing the action. मन चलायमान न होने पावे. Don't let the mind become unsteady. किसकी याद में रहने से चलायमान नहीं होगा? From remaining in whose remembrance won't it be unsteady? जो सदा अमन है. कौन है अमन? शिव. The one who is always in the state of a peaceful mind. Who is in the state of a peaceful mind. Shiva. वो अभुक्ता है, सदैव अभुक्ता है. इस सृष्टि पर आता है, साकार तन में प्रवेश करता है, तो भी अभुक्ता है. He is beyond experience. He is always beyond experience. He comes to this world, he enters the corporeal body, yet he is beyond experience. साकार संग के शरीर, साकार शरीर के साकार रूप में संग रहता है, तो भी अभुक्त है. He remains in the company of the corporeal body, in the corporeal form, yet he is beyond experience. बच्चों आदि को भी तुम बच्चों को संभालना है. You children have also to sustain children and so on. धंधा आदि भी करना है, परंतु धंधे में भी प्रैक्टिस करनी है कि हमको याद रहे कि मैं आत्मा हूँ. You also have to work and so on. But even at work you have to practice to remain in the remembrance, I am a soul. आत्मा को ही सौदा दे रही हूँ. I am doing business with souls. ये बात बड़ी मुश्किल है. This issue is very difficult. क्या? What? कि मैं आत्मा को सौदा दे रही हूँ. That I, soul, am doing business with souls. बाप कहते हैं कि कोई भी उल्टा काम कब नहीं करो. कोई पूछते हैं कि बाबा हमको झूठ बोलना पड़ता है. The father says, never do any opposite work. It means opposite to the shrimat. Some say, Baba, we have to tell lies. 2 के बदले में हम 4 ले लेते हैं. We take 4 instead of 2. बाबा कहते हैं ये बात कोई बड़ा पाप नहीं है. Baba says, this is not any great sin. क्या? What? ये तो आज की दुनिया का धंधा है. This is the occupation of the today's world. झूठी दुनिया में सब धंधे झूठे ही. In the false world, all the occupations are just false. ये धंधा तो करना ही पड़ेगा. You will have to do this work. ये तो बहुत छोटी बातें हैं. These are minor things. बड़ी बात क्या है? What is important? भले 2 का 4 लेते हो, लेकिन क्या करो? All right, even if you take 4 instead of 2, but do what? कि मैं आत्मा इस आत्मा को सौदा देती हूँ, ये याद रहे. This remembrance should remain that I, soul, am doing business with this soul. आजकल की तो दुनिया ही झूठी है. The today's world is false. सबसे बड़ा पाप है विकार का. The greatest sin is that of vice. कौन सा? Which? कार माने कर्म. Kar means the action. और विकार माने विपरीत कर्म. And vikar means the opposite action. ऐसा विपरीत कर्म. Which opposite action? जो कर्म बाप ने नहीं बताया है, वो कर्म करना. Performing the action that the father hasn't mentioned. कर्म करना है. One has to perform the action. लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, वो बाप ने हमको बताया. But the father has told us which action should be performed, which mustn't be performed. बाबा के पास ऐसे समाचार आते हैं, लिखते हैं. Such messages come to Baba. They write them. उन समाचार को तुम सुनो तो वंडर खावेंगे. If you listen to those messages, you will be surprised. सेंटर पर आते हैं समझने के लिए. They come to the centers in order to understand. सेंटर पर आते हैं ज्ञान समझने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए. They come to the centers in order to understand knowledge, to get to know the soul and the Supreme Soul. फिर पढ़ाने वाले टीचर पर फिदा हो जाते हैं. Then they become devoted
to the teacher who teaches them. अरे Oh, तुम आए थे क्या करने you came to do what? और करने लगे क्या? And what did you start doing? उनको जाकर कहते हैं They go and tell them, कि तुम मेरे से शादी करोगे? will you marry me? उस टीचर को लगा गुस्सा, That teacher got angry. उसने थप्पड़ मार दिया. She slapped him. ऐसे फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं. In this way, they go to another center. वहां से थप्पड़ खा लिया. They got slapped there. फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं. And then they go to other centers. ऐसे ऐसे कामेशु क्रोधेशु फिर डैम फूल बन पड़ते हैं. They become lustful, then angry, and then they become damnfuls. एक सेंटर से मार खा करके दूसरे पर चले जाते हैं. Having been slapped in one center, they go to another. ऐसे को तो कोई मजबूत माता हो In this way, if there is any strong mother, तो ऐसी चमाट मारे जो गाल ही लाल हो जावे, निशान पड़ जावे. she would give such a smack that the cheek would turn red. The marks would be left. कन्या थप्पड़ मारती है वो तो धीरे से लगेगा. If a young woman gives a smack, it will be felt slowly. कोई हट्टी कट्टी मोटी सी माता हो तो ऐसा थप्पड़ मार देता है. If there is some sturdy, fatty mother, she would give such a smack. 11 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज. The third page of the Vani of July 11th, 2007. ऐसा थप्पड़ मारे जो गाल लाल हो जावे और भाग जावे, फिर कभी ना आवे. She should strike such a blow that the cheek would turn red. He would run away and never come back. ओम शांति. Om Shanti. दूसरे सेंटर पर जाकर के You should go to other centers. वहां भी ऐसे ही चमाट मार करके भगा देना चाहिए. And also over there, in the same way, you should strike a blow and turn them out. छोड़ना नहीं चाहिए. You shouldn't give up. ओम शांति.